ओके, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? रिकॉर्डिंग ऑन. ओके. ओके, लास्ट टाइम हमने किया था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस. You know, if it is bounded about, then it must converge. In fact, it must converge to its least upper bound. So that's what we were doing. Now let's start from there. Can all of you hear me? एक बार फिर बताओ. Hello? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. Okay, क्या था इसको? कहाँ गया ये? Okay, so let me share the screen whiteboard. तो हम बात वहीं से शुरू करेंगे. वो monotonic increasing sequence. कहाँ गया ये? Okay. तो उसके बाद हम ये एक कॉरेलरी करेंगे, जो कि मैंने इससे पहले बहुत बार तुम्हें ये एग्जांपल ली सीक्वेंसेस की. अब हम दिखा सकते हैं कि एक्चुअली ये कन्वर्ज करती है. सो लेट्स राइट डाउन इट एज अ कॉरेलरी. कॉरेलरी ये हम करेंगे उस कि द सीक्वेंस n runs from 1 to infinity, where this n is given by this thing. n is equal to 1 plus 1 by n whole raised to power n is convergent. हम प्रूव करेंगे. और बाय द वे तुम्हें पता ही इसकी पहली टर्म क्या होगी. मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, तुम इसको लिखोगे. पहली टर्म होगी 2, दूसरी टर्म होगी 1 plus 1 by 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म होगी 1 plus 1 by 3 का क्यूब, and so on and so forth. So let's start. We show that it's convergent. इसका proof. Now 1 an equal to 1 plus 1 by n whole raised to power n. अगर हम इसका binomial expansion देखें, so it would be 1 plus n times 1 into n plus n into n minus 1 by 2 factorial into 1 by n square. इसी तरह से तीसरी टर्म आएगी n into n minus 1. और ये तुमने किया होगा लोअर क्लासेस में बाइनोमियल थ्योरम से. फिर 1 by n cube plus so on and so forth. और लास्ट वाला होता है n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1 divided by n factorial, right, into 1 by n raised to power n. It is just binomial theorem, binomial expansion हमने इसका किया. And you must remember इस binomial expansion में जैसे हम करते हैं a plus b का स्क्वायर, तो वो बराबर होता है a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर. यानी जो यहाँ का पावर होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे एक ज्यादा होती है. अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है. यानी ये जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सपेंशन है इसमें होगी n plus 1 term, n plus 1 terms. Now for k equal to k का वैल्यू अगर मैं लूं 1 2 up to n, जो k plus 1th term होगी, k plus 1th term यानी सेकंड थर्ड फोर्थ जो टर्म होगी, क्योंकि पहली टर्म तो 1 तो पता ही, लेकिन k plus 1th term जो होगी यानी सेकंड थर्ड फोर्थ एंड n plus 1th, वो इस टाइप की है बेसिकली n into n minus 1 up to so on and so forth into n minus k minus 1 whole divided by k factorial into 1 by n raised power k. क्योंकि देखो 1 by n कब आ रहा है? सेकंड टर्म में. तीसरी टर्म में n का पावर स्क्वायर है ना. चौथी टर्म में n का पावर क्यूब है. यानी n k होगा तब जब हमारी टर्म होगी n plus k. और तुम देख सकते हो पहली टर्म में खाली n है, दूसरे में n minus 1 है, तीसरे में फिर फिर k plus 1th टर्म में यहाँ आएगा n minus k minus 1. 0 से k minus 1 तक हम जाएंगे.
Anyway, so this would be our k plus 1th term जो इसमें होगी. Okay, which can be written as, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नीचे में लिखूंगा k फैक्टोरियल को 1/2 into 3 into 4 into up to जो भी है k, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक n के साथ खत्म हो जाएगा, है ना. आई पुट यहाँ, चलो ऐसे लिखता हूँ n into n minus 1 into n minus k minus 1. ये कितनी टर्म्स हैं ऊपर? It is like n minus 0, n minus 1, n minus k. So ये जो ऊपर टर्म्स हैं, they are exactly key terms, right? और नीचे है n into n k times. तो मैं इनको आपस में डिवाइड करूंगी और ये कैंसिल, इस तरह यहाँ पे होगा n minus 2, so on and so forth. तो मैं इसको लिख सकता हूँ as 1/1 into 2 into 3 up to k multiplied by n minus 1 into n minus 2 into n divided by n, मैं कह रहा हूँ, so on and so forth. मैंने इसको ब्रेक किया, n minus k minus 1 divided by n. यानी ये जो k plus 1th टर्म है, k plus 1st टर्म, ये होगी 1/1 into 2 into 3 up to k into 1 minus 1 by n multiplied by 1 minus 2 by n, so on and so forth, 1 minus k minus 1 by n. इसी को मैंने ब्रेक किया, as you can see, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus 1 by n, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus 2 by n, and so on and so forth. So this is the expansion of this term to k plus 1st term, a general term of this expansion. If we expand now n plus 1th term, यानी a n plus 1 अगर मैं expand करूं, that would be 1 plus 1 by n plus 1 raised to power n plus 1. So using the same thing, अब बिना वो लिखे मैं चाहूंगा तुम रफ पे करो. We obtain n plus 2 terms in the expansion. ये तो तुम्हें पता ही होगा, but do it on the rough. And for k running from 1 2 up to n k plus 1th term जो होगी इस expansion की, by the same formula, k plus 1st term of the expansion बराबर होगी equal to क्या होगा, पहला आएगा 1 into 1 2 up to k factorial, k यानी k factorial तक रहेगा 1 minus 1 by n plus 1, जैसे यहाँ था 1 minus 2 by n plus 1, so on and so forth, 1 minus k minus 1 divided by n plus 1. जब हम उसको expand करेंगे तो ऐसे ही होगा. But this would be bigger than or equal to 1/1 2 up to k into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n into 1 minus k minus 1 by n. That is our k plus 1st term of an. So this is k plus 1st term. So that is, चलो अच्छा, यहाँ ये इसलिए होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा है ना. Because 1 by n plus 1 would be less than 1 by n because n is less than n plus 1. अगर वैसा है तो अगर ये छोटा नंबर है, अगर मैं छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो वो नंबर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ सेम नंबर से मैं ज्यादा मतलब छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये छोटा होगा. This would be less than this, this would be less than this, this would be less than this. So therefore, k plus 1st term of an is an plus 1 is bigger than equal to k plus 1st term of an. So what does that mean? Well, that means an plus 1 must be bigger than a plus मतलब an for all n. और चूंकि फॉर ऑल एंड ट्रू होगा, बाय द वे यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूं, वो ये कि इसमें एक और टर्म भी ऐड होगी. एक तो ये है ना
क्योंकि जब मैं ये तो एक टर्म है ना, हम टर्म वाइज इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इसकी k+1 ये जो n+1 है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी है, वो भी ऐड हो, यानी वो उसको और बड़ा करे इन जनरल, क्योंकि इसमें k+2 टर्म्स होंगी। टर्म वाइज तो सारी मैच हो रही है, एक बड़ा है, मतलब इसकी टर्म्स बड़ी हैं इसकी टर्म से। So what I'm trying to say is that in general we must have this thing. So hence I can say that n+1 positive terms, that's also important, is bigger than a equal to 1 for all n equal to 1. So that is an जो हमारी sequence है, n runs from 1 to infinity, is monotonic increasing. अब हम दिखाएंगे ये बाउंडेड अबव है, तो फिर इसको कन्वर्ज होना ही, ठीक है ना, बट ऑल्सो अब हम दिखाएंगे इट इज बाउंडेड अबव। an कैन बी रिटन एज, जो हमने अभी लिखा, 1 plus n into 1 by n plus n into n minus 1 by 2 into 1 by n square plus so on and so forth, n into n minus 1, so on and so forth up to 1, yeah, 2 up to 1, divided by n factorial, we have 1 by n raised to power n, which can be written as 1 plus, now this is 1, फिर आएगा यहाँ plus 1 by 2, एक n cancel इसके साथ, and then it would be 1 minus 1 by n, plus इसी तरह से आएगा 1 into 2 into 3 into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n, you know, मैंने यहाँ लिखी नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं. So plus so on and so forth, I should have a situation like 1 by n factorial into 1 minus, क्या होगा अपना, 1 by n, so on and so forth up to, कहाँ तक जाएगा ये, 2 by n, so it will be 1 minus n minus 1 by n, right, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है. Okay, now see what happens. Now this is strictly less than 1 plus 1, मैं ऐसे ही रखूंगा, plus 1 by 2, because this is less than 1, this is less than 1, this is less than 1, this is, all जो factors है वो less than 1 है, so this will be less than 1 by 2 plus, और क्या बचेगा, 1 by 2 into 3 plus so on and so forth plus 1 by n factorial, क्योंकि ये सारे numbers less, it is 1 minus something positive, so they are all less than 1. So, but this is further less than 1 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on and so forth plus 1 by 2 raised to power n minus 1. So that can be checked, because of course 1 by 4, 1 by 6 is less than 1 by 4, because 4 is less than 6. And मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसी तरह से यहाँ पे कंपैरिजन होगा, 1 by 2 into 3 into 4 would be less than 1 by 2 raised to power 3, because 8 is less than 6, 4 or 24, and so on and so forth. But this is equal to, but this is less than 1 plus 1 plus 1, because ये जो सारे का सारा है, this is geometric, ये यहाँ से, चलो मैं लिख देता हूँ ठीक से. Okay, so I am getting an is less than now 1 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on and so forth plus 1 by 2 raised to power n minus 1. Now this is a geometric progression. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, so it is 1 is less than 1 plus geometric progression के लिए फॉर्मूला है, and n terms के लिए 1 by 2, common ratio is first term is 1, common ratio is what, or n terms है, common ratio is 1 by 2, नीचे आएगा 1 minus 1 by 2, so that is equal to 1 plus 1 minus 1 by 2 raised to power n divided by 1 by 2, which is further less than 1 plus 1 by 1 by 2, that's equal to 3, because this is less than 1 for all n. So an is less than 3. So therefore ये जो मेरी sequence थी an, जो कि very special sequence है, is bounded above. अगर कोई bounded sequence, monotonic increasing sequence जो कि हमने पहले दिखाया, is bounded above,
So therefore an converges. N runs on to infinity, right? So uh, we usually denote we denote by E इसका limit E से हम denote करते हैं. Limit n approaches infinity an को हम क्योंकि converge करती है तो इसका कोई limit होगा, उसको हमने नाम दिया है E, which is equal to limit n approaches infinity 1 plus 1 by n whole raised to power n. और हम ये ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा और 3 इसका अपर बाउंड है, सो ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन 3. बट लेकिन अगर हम यहाँ देखें an is less than 3 but it must be bigger than 2 क्योंकि इसकी पहली टर्म्स दो टर्म जो है वो 1 plus 1 है ना. अगर मैं यहाँ देखूं ये जो सारे का सारा है ये एक्सप्रेशन ये तो है 1 plus 1 plus something, so it is bigger than 2 for all n. Therefore I can say so it is also I can say that also E is bigger than 2, hence E lies between 2 and 3. In fact, we can show that, well, it's very easy to show that E is, we can prove that it's equal to something like 2.714. But यहाँ पर हम वो दिखाना नहीं चाहते. यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और इसका जो लिमिट है that would be a number between 2 and 3. Okay, तो ये एक और रिजल्ट हो गया regarding these monotonic increasing sequences. Then before going to subsequences, हम पढ़ना चाहेंगे what we call a nested interval theorem. Again, it depends upon जो हमने अभी पढ़ा regarding these monotonic increasing and monotonic decreasing sequences. So let me write it down. Nested interval theorem. Nested interval theorem says if you have a sequence of closed intervals, if a sequence of closed intervals let's denote them by I sub n equal to the closed interval an comma bn. If you have a sequence is such that each member is contained in the previous member. By that I mean in plus 1 is contained in in for all n belonging to the set of natural numbers, right? And the length जो इनकी है वो कम हो रही है, limit n approaches infinity, bn minus an is equal to 0. तो मैं पहले इसको स्टेट करूंगा फिर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. Then there is one and only one point, important है, contained in all intervals a. तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्या मैं कह रहा हूँ. अगर हमारे पास ये इंटरवल है बहुत सारे, यानी पहला इंटरवल है सी A1 B1, ये क्लोज इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ये रियल लाइन मान लो. हम कह रहे हैं कि हमारे इंटरवल ऐसे हैं कि हर कोई जो दूसरा इंटरवल है, यानी मेरे पास इंटरवल्स हैं I1, I2, I3, इस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, और I1 जो है वो उसको मैंने नाम दिया A1 B1, इसका मैंने नाम दिया A2 B2, इस तीसरे का नाम दिया मैंने A3 B3. Furthermore, in plus 1 is contained in in, यानी I3 is contained in I2 is contained in I1, so on and so forth. इसी तरह से I4 is contained in I3. मेरे कहने का मतलब है A1 B1 जो इंटरवल है, it contains another interval, A2 B2 जो दूसरा इंटरवल, तो तीसरा इंटरवल होगा मेरा A3 B3, और चौथा इंटरवल होगा मेरा से A4 B4. It is contained in the previous one.
तो इस तरह से अगर इसीलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड इंटरवल्स, ये नेस्ट जैसा है ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक इंटरवल है। अगर इस तरह के मेरे क्लोज इंटरवल्स हैं, फिर उसके अंदर एक और इंटरवल है A5 B5, इसी तरह से जा रहा है। हम इस तरह से एक क्लोज इंटरवल, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक। और अगर इनकी जो लेंथ है, आप हम देख रहे हैं, ये जो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है जो मतलब इस इंटरवल की लेंथ होती है B1 माइनस A1, जो अपर वैल्यू है माइनस द लोअर वैल्यू। सो अगर वो एज हम ऑब्वियसली हम इसको छोटा छोटा कर रहे हैं ना, तो अगर इन इंटरवल्स की लेंथ 0 को अप्रोच होती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है, देन जो अल्टीमेटली इसके अंदर बचेगा ना इन इंटरवल में, वो सिर्फ एक पॉइंट होगा। देयर वुड बी वन एंड ओनली वन पॉइंट व्हिच वुड बी कंटेन्ड इन ऑल द इंटरवल्स। ऑल द इंटरवल्स में, चूंकि अगर सबसे छोटे वाले में होगा तब तो सभी में होगा, तो सबसे और ये और छोटा अगर होता जाएगा, ये सीक्वेंस इस तरह से होगी, मतलब विच सीम्स रादर मतलब ऑब्वियस कि अल्टीमेटली इसमें फिर एक पॉइंट बचेगा जो सभी इंटरवल्स में कंटेन होगा, और एक ही होगा, देयर वुड बी नेवर मोर देन वन। तो हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग अवर दिस जो हमने अभी तक पढ़ा, ये रिगार्डिंग दीस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। Proof: since each interval is contained in the previous one in the sequence, in the preceding interval in the sequence, in the sequence, therefore we have, क्या है हमारे पास, मैं जो मैंने इसकी पिक्चर बनाई उसको देखूं, I must have then A1 less than equal to A2 less than equal to A3 less than equal to A4. No, I should have A1 इस तरह से, और I should have इसी तरह से B1 bigger than equal to B2 bigger than equal to B3, है ना, मतलब B1 B2 से बड़ा होगा, वो B3 से, B4 से, लेकिन A1 A2 से छोटा होगा, वो A3 से। And I will get two sequences, एक जो monotonic increasing है, दूसरी जो monotonic decreasing है. So that's what we write. So therefore we have A1 is less than equal to A2 is less than equal to so on and so forth, and B1 is greater than equal to B2 is greater than equal to the same, so that n runs from 1 to infinity, is a monotonic increasing sequence. And Bn जो दूसरी sequence है, n runs from infinity, it is a monotonic decreasing sequence. Also, An is less than equal to B1 for all n, and Bn is bigger than equal to A1 for all n. ये भी हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जो हमने ड्रॉ की। देखो ये जो Bn's हैं, ये सारे के सारे A1 से तो बड़े ही होंगे, और ये जो An's हैं सभी, ये सारे के सारे B1 से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि B1 इनका अपर बाउंड होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, ये जो An है, इट इज बाउंडेड. So therefore, An is bounded above and Bn is bounded below. तो अभी जो हमने इससे पहले किया था, अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है which is bounded above, then it must converge. इसी तरह अगर आपके पास एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है that is bounded below, it must also converge. तो हम क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे, since a monotonic increasing sequence bounded above converges, and a monotonic decreasing sequence
bounded below converges, तो ये दोनों sequences converge करनी चाहिए. Therefore, an and transformity converges and bn जो अपना है n transform to infinity also converges. So let limit n approaches infinity, an be equal to some, let's call it z, चलो zeta करते हैं इसका नाम, and limit n approaches infinity, bn be equal to eta. So but we also have given that जो length है bn minus an की, it is equal to 0, which implies that limit n approaches infinity using the laws of the limits, which means that what do I have? Zeta, eta minus zeta is equal to 0, which means that n to eta of zeta same होना चाहिए, right? तो कहने का मतलब इन दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए because of this condition, इनकी length 0 हो रही है intervals की, यानी they both the sequences converge to the same limit, right? Okay, also ये भी हमें पता है, ये जो zeta है, it is the least upper bound, क्योंकि ये जो monotonic increasing sequence and that is bounded above, it converges to its least upper bound. So it's least upper bound of an, and also now, also because this eta is equal to zeta, zeta is also the greatest lower bound, GLB infimum, the greatest lower bound, GLB, yeah, infimum of Bn. And infinity, yeah, so what do I have now? So what does that mean? It implies that an must be less than equal to zeta, must be less than equal to bn for all n. क्यों? क्योंकि of course ये इसका upper bound है और इसका lower bound है, मतलब तो इसका मतलब इससे बड़ी ही होनी चाहिए, इससे छोटी ही होनी चाहिए, which means that zeta belongs to all intervals, all of these closed intervals for all n. Now we have to show that इसमें लेकिन एक ही point है जो सब में, एक तो है जो सब में है, लेकिन अब हम दिखाएंगे एक ही होगा. Now we show that this zeta is unique. For if, assume to the contrary, there exist two numbers, and there exists some zeta 1 not equal to zeta such that ये जो zeta 1 है ये भी belong करता है in for all n. So then zeta 1 minus zeta cannot be equal to 0. अगर 0 नहीं है या तो positive होगा या negative होगा. Say so we may assume, अगर हम positive भी लेंगे तो भी चलेगा, negative लेंगे तो भी सही होगा. We may assume that what should I do? Suppose zeta 1 minus zeta is negative. Positive भी होगा ना, a similar argument works. A similar argument. चलो ऐसे ही करते हैं, लास्ट में लिखेंगे. Suppose ये negative है, right? यानी that is zeta 1 is less than zeta. अगर ऐसा है, so then I have got an is less than equal to zeta 1 is less than zeta is less than equal to bn for all n belonging to, क्योंकि ये सभी intervals में है, दो points जो एक दूसरे से different है. Okay, it implies that bn minus an is greater than equal to zeta minus zeta 1,
which is positive for all n belonging to the set of natural numbers, which implies that limit Pn minus an n, क्योंकि सभी n के लिए है तो तब भी ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये तो जीरो है, which is absurd. So therefore zeta must be the same as zeta 1. The similar argument works, जो कि तुम देख सकते हो, works if we choose zeta less than zeta 1. So this contradiction proves that this zeta is unique, मतलब दूसरा नहीं हो सकता. And we are done. So हमने prove किया nested intervals here. Now एक और चीज जो हमारी रह गई है वो है subsequence. अब subsequence क्या होती है? You know, I have a sequence, उसका subset, लेकिन ऐसा subset जो उस sequence के order को preserve करे, ठीक है ना? तो so that's the definition basically. A subsequence is a subset of a sequence which is a sequence itself and preserves the order of the original sequence. मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर हम थोड़ा इसको प्रॉपरली रिगरसली लिखने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? पहले तो सपोज आई हैव गॉट अ सीक्वेंस, say 1 2 3 sequence of natural numbers, right? I can take another sequence, say 2 4 6 8, है ना? Of course ये जो सीक्वेंस है, ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस की सबसेट है इसका. Furthermore, ये जो ऑर्डर था, देखो इसमें 2 पहले आता था, 4 बाद में आता था, और 4 के बाद ही 6 आता था. यानी जो ऑर्डर है इस सीक्वेंस का वो मेंटेन्ड है. सपोज मैं लूं कोई सीक्वेंस, कोई और सबसेट इस ओरिजिनल सीक्वेंस का, जैसे अगर मैं लूं 2 1 5 3, ये इसका सबसेट तो है, इसका सबसेट तो है, लेकिन सब सीक्वेंस नहीं है. क्यों? ये सीक्वेंस है अपनी जगह, लेकिन इसकी सब सीक्वेंस नहीं है. क्यों सब सीक्वेंस नहीं है? क्योंकि ये जो इस ओरिजिनल सीक्वेंस का ऑर्डर है वो मैच नहीं, मतलब वो इसको प्रिजर्व नहीं होता. यहाँ 1 2 से पहले है, लेकिन यहाँ इसके बाद, राइट? तो ऑफ कोर्स इसका ये सबसेट है, लेकिन इसकी सब सीक्वेंस नहीं है. तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर. तो बेटर स्टिल हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मेरे सब सीक्वेंस है, मेरी सीक्वेंस जो है A1 जनरल, A3 A4, है ना? तो इसका जो इंडेक्स सेट है, जो ना मुझे बताता है पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, तो वो जो है वो नेचुरल नंबर्स है. यहाँ जो मेरा सबसेट है, इंडेक्स सेट है इसका, जो मुझे बताता है वो है नेचुरल नंबर्स, राइट? तो अब जो इसका सब सीक्वेंस होगी, ठीक है ना, उसका इंडेक्स सेट होगा, जिसको हम यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं, AN1 AN2 AN3 AN4, इन जनरल ANK हम लिखते हैं. सबसीक्वेंस ऑफ AN, ये इसकी सबसीक्वेंस है. K runs from 1 to infinity, यहाँ है N runs from 1 to infinity. डरने की बात नहीं. तो इसका इंडेक्स सेट है N1 N2 N3, और ये जो N1 N2 N3, it must be a subsequence of natural numbers. यानी इसका जो इंडेक्स सेट है subsequence का, it must itself be a subsequence of natural numbers.
I hope I'm clear. By that I mean if I हम कांस्टेंट सीक्वेंस लेंगे तो उसकी सबसीक्वेंस भी वही होगी ना? कांस्टेंट सीक्वेंस तो होगा वन, मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस की सबसीक्वेंस तो वही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब वो तो ट्रिवियलिटी है ना। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इम्पोर्टेंट, हम इसको मैथमेटिकली कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं अच्छा इसका जो इंडेक्स है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। ऑर्डर को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें इस इंडेक्स सेट को प्रिजर्व करना है, यानी इसका जो इंडेक्स सेट है n1 n2 n3 इट मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मेरे कहने का मतलब इसी को हम इस तरह से कहते हैं, इफ I is less than j then ni must be less than nj। यानी मैं आई होप मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि सबसेट है, सबसीक्वेंस है, ऑर्डर प्रिजर्व रहती है, उसी बात को हम थोड़ा मोर टेक्निकली इस तरह से कहते हैं, यानी इसका इंडेक्स सेट शुड बी अ सबसीक्वेंस ऑफ, यानी वो ऑर्डर को प्रिजर्व रखनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब आई कुड हैव अ सबसीक्वेंस, चलो मैं ऐसे बताता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, सपोज आई हैव a1 a2 a3 a4, फिर मैं लिख सकता हूँ a1 a4 a9 इन जनरल an स्क्वायर। तो उसके बाद मेरा इसका मतलब मेरा n1 जो है वो 1 है, n2 क्या है मेरा वो 4 है, n3 क्या है मेरा 9 है। Now clearly 1 is less than 4 n1 is less than n2, है ना। मेरे कहने का मतलब 1 is less than 2, लेकिन n1 is also less than n2, n2 is less than n3, यानी जो मेरा नया इंडेक्स सेट है उसको मैंने n1 n2 n3 से लिखा, ने 1 1 4 9 इस ओरिजिनल सीक्वेंस की, तो वो उस ऑर्डर को प्रिजर्व करती है, यानी 1 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, राइट, 4 9 से बड़ा नहीं है, तो जब वो उस ऑर्डर को प्रिजर्व करती है तो हम कहते हैं वो उसकी सबसीक्वेंस है। यानी जो इंडेक्स होगा सबसीक्वेंस का, अगर ओरिजिनल सीक्वेंस का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी अगर मैं उसको ai मानता हूँ, i runs from 1 to infinity, ना चलो मैं ऐसे नहीं लिखता, ये n, तो उस ni जो मैंने रखा है I runs from 1 to, इनमें जो रिलेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, अगर I is greater than j या less than j, then I should be greater than nj। So इसको हम डिनोट करेंगे सबसीक्वेंस को, हमेशा बुक्स भी ऐसे ही करती हैं, a and I, कभी a and j, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि I runs from 1 to infinity, it's a dummy, j runs from 1 to infinity, और ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसको हम a n से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, तो अब सबसीक्वेंस से रिलेटेड, मतलब मुझे लगता है ये 1 आध मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस